के, क्यूबिक के, रेसिप्रोकल फंक्शंस के, फिर स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल फंक्शंस के, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, इन सारों की जितनी भी रफ स्केचेस हैं, इनका आइडिया आपको होना चाहिए। रफ स्केचेस से मुराद है दो चीज़ें, एक द वे दे लुक, दूसरा जो की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे एक्स इंटरसेप्ट्स, वाई इंटरसेप्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ मैं बनाऊं, तो हर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तकरीबन ये होता है, ठीक है, वो वाई एक्सिस पे 1 पे कट करता है। दिस इज अ की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह की जितनी इंफॉर्मेशन है ये आपको पता होंगी, तो हम बहुत अच्छे से डोमेन रेंज को समझ पाएंगे। क्योंकि डोमेन रेंज को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको बताऊंगा। कभी कभी एक ग्राफिकल मेथड है और एक अलजेब्रिक मेथड है। समटाइम्स ग्राफिकल मेथड फेल हो जाता है, फिर हम अलजेब्रिक मेथड पे आते हैं, ठीक है। वैसे ग्राफिकल मेथड यूनिवर्सल मेथड है। अगर आपको ग्राफ अच्छा आता है, उसका दिमाग में स्केच बना सकते हैं, तो फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस भी आ जाता है। वो एक अलग चैप्टर आ जाता है, उसके अंदर भी हमें 2-3 दिन लग जाएंगे। ओके, चलिए जी बेसिक्स इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज लेसन इज जस्ट अ बेसिक क्विक रिकैप के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3x-1। आज मैं कोशिश करता हूँ आज का और कल का लेसन जो है वो हम कंबाइन करके 2 दिन में हम इसको रैप अप कर लें, ठीक है। 2 दिन का काम आज कर लेते हैं, ठीक हो गया। सो इफ दिस इज द फंक्शन आई वांट यू टू फाइंड आउट, ये करते जाएं साथ साथ, एफ ऑफ 5, ठीक है। अच्छा, मेरे लेसन्स जो है वो स्टैंडर्ड होते हैं, जो यूट्यूब का प्लेलिस्ट भेजूंगा उसमें भी आपको यही चीज मिलेगी। नेक्स्ट इज f of -2, f of 5k, value of x if f of x is equals to 0, value of x if f of x equals 5, f of x squared plus 5, value of k if f of k plus 1 equals 4। चलो शाबाश, पहले ये कर लें। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र सर। ओके। तो ये क्वेश्चंस दिए मैंने कुछ, इनको अटेम्प्ट करना है अभी। ये फंक्शन टॉप पे लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-1। आज हमने फंक्शन स्टार्ट किया है। जी बेटा बोले। What does it say after fk plus 1 equals? 4. Is it out of the frame or is it not readable? It's not readable. Sorry,
It's f of k plus 1 equals 4. बल्कि एक काम करें, इसका इन्वर्स भी साथ ही निकालें। ओके, लास्ट वन। ओके बेटा, f of 5 होगा, x की जगह आपने 5 पुट करना है। सो इन प्लेस ऑफ x वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 5 इन इट। सो दैट इज गोइंग टू बी 15 minus 1 14। यही आंसर आ रहा है, ठीक हो गया। f of -2 into 3 is -6 -7 आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 5k, x की जगह आपने 5k पुट करना है, तो 15k minus 1, 15k minus 1 इसमें आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ x इफ f of x equals to 0, so the function f of x को 0 के इक्वल आपने पुट करना है, which is 3x minus 1 equals to 0. so 3x minus 1 equals to 0, यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 1/3। वैल्यू ऑफ x इफ f of x equals to 5, f of x को 5 के इक्वल आपने पुट करना है, so f of x is 3x minus 1 and it is equals to 5. तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी यहाँ से, ऐसे ही 2 आ रहा है, ठीक हो गया। f of x squared plus 5, f of x squared plus 5 का मतलब है x की जगह x squared plus 5 पुट करेंगे, बाकी एज इट इज 3x squared plus 15 और फिर आगे -1 है तो 14 आंसर आ जाता है, यही है 3x squared plus 14। value of k if f of k plus 1 equals to 4, so f of k plus 1 होगा आपके पास 3 into k plus 1 minus 1, ये f of k plus 1 आ गया, फंक्शन f में x की जगह k plus 1 पुट किया and this is equals to 4, तो ये आ जाएगा 3k plus 3 और फिर -1, ये 2 आ गया, that was 4। ठीक हो गया, equals 4 and then k is equals to 2/3। अच्छा, f inverse of x, f inverse of x कैसे करते हैं, 3x minus 1, so f of x equals 3x minus 1, y equals 3x minus 1, x को सब्जेक्ट बना ले, कुछ लोग यहीं पे वेरिएबल्स को स्वैप कर देते हैं, बाद में सब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ पहले x को सब्जेक्ट बना ले, जैसे आपकी मर्जी है। तो 3x is equals to y plus 1, x is equals to y plus 1 over 3। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को स्वैप कर लेंगे, x plus 1 over 3, so f inverse of x equals to x plus 1 over 3। लीनियर फंक्शन कोशिश करें f इनवर्स तक डायरेक्ट पहुंचे, क्योंकि सब्जेक्ट बनाने की आपको अच्छी प्रैक्टिस है, ये मैंने वैसे ही इलाबोरेट किया था, दिस इज हाउ यू मेक एक्स, मतलब किसी को सब्जेक्ट बनाना है वो भी रिवाइज हो गया, ये प्रॉपर डिटेल्ड प्रोसीजर आ गया कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ तक कोई डाउट?
This was the quick recap of what you have done in your IGCSE and O levels. ठीक है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं. ओके, नेक्स्ट है आपके पास f of x equals 3x squared minus 7x plus k. अच्छा, क्वेश्चन है बेटा, if f of 2 is equals to 9, find k. एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन है if f of 1 is equals to 3k, find k. हाँ जी अब्दुल्ला, would you like to answer the first one? Sir, k is equals to 11. A is equals to 11. हाँ जी, बाकियों के भी यही आंसर आ रहा है. Okay, so basically f of 2, which is going to be 3 into 2 squared minus 7 into 2 plus k. This is f of 2, and examiner told us that this is equals to 9. यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 आ जाएगी. ठीक हो गया. आयशा बेटी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगी? f of 1 equals 3k, find k. आयशा? सर मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ 2 मिनट. अच्छा, ठीक है करें. रिदा बेटी, आपसे हो गया? Sir, almost done. ठीक है, गुड. हाँ जी, हुआ? Okay, f of 1, 3 into 1 squared minus 7 into 1 Sir, k plus k. is equals to minus 2. Very good, k equals to minus 2. Shabash. So 3 into 1 squared minus 7 into 1 plus k, and this is equals to
3k, ये बेटा ये वाला जो पार्ट है दिस इज f of 1 and this is 3k. This is the equation given by the examiner. इसे आपने इक्वेशन बनानी है और फिर आगे आपने सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा k का 3 minus 7 plus k minus 3k equals 0 minus 2k equals 4, k equals minus 2। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट्स? चलिए अब चलते हैं इनवर्स फंक्शन की तरफ। ओके, 5x plus 3, इसका जरा जुबानी सोचें बगैर कॉपी पे जंप किए, बगैर बताए जरा। थिंक इट इन योर हेड, कैन यू थिंक इट डायरेक्टली? जस्ट कीप इट इन योर हेड और इफ यू लाइक टू शेयर द आंसर तो बता भी दीजिएगा। अब x minus 3 divided by 5, ओके ठीक हो गया। चले हम इसको वेरीफाई कीजिएगा कि निकालें इसका इनवर्स। शाबाश, x minus 3 over 5, वेरी गुड। अच्छा जी, एक और फंक्शन है g of x, that is 7x squared minus 4 over 2, 7x squared minus 4 over 2। बेटा दोनों का इन्वर्स निकालें, f इन्वर्स भी निकालें और g इन्वर्स भी निकालें। एक और फंक्शन भी देते हैं, एक है फंक्शन h of x, that is 2x minus 1 over 3 plus 5x। तीनों का इन्वर्स निकालें, f इन्वर्स, g इन्वर्स, h इन्वर्स। डन, तीनों हो गए आपसे भी? यस हफ्सा, Done, sir. डन, गुड। आयशा, Sir, last one. ठीक है ठीक। और अब्दुल्ला, सर लास्ट वाला रहता है। रिदा, Last one.
हो गया? लास्ट वाले पे स्टक हो गए जी अब्दुल? जी सर हो गया। हो गया, ओके। रिदा एंड आयशा, लास्ट वाला कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? नहीं हो आयशा, लास्ट वाला नहीं हुआ? चलिए ठीक है जी, देखें जी। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ इनवर्स निकालते हैं सबसे पहले। तो ये तो हो जाना चाहिए। सो y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 is equals to 5x, x equals y plus 3 over 5. So f inverse of x is equals to x plus 3 over y. यही है? नहीं, गलत कर दिया कुछ मैंने, -3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट निकाले आप बेटा जी इनवर्स। जी इनवर्स के लिए y equals 7x squared minus 4 whole divided by 2. 2y equals 7x squared minus 4. 7x squared equals 2y plus 4. X squared equals 2y plus 4 whole divided by 7. इसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है। अच्छा बेटा, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं, एक प्लस का निशान आता है और एक माइनस का। रूट प्लस माइनस 2y plus 4 over 7. Therefore, g inverse of x equals to plus minus 2y plus 4 over 7. फिलहाल के लिए आप प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे पर ना, ठीक है? इन रियलिटी इट इज आइदर गोइंग टू बी प्लस और माइनस। उसकी रीजन मैं आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल के लिए फॉर मोमेंट आपने दोनों लगा देने, क्योंकि मैंने कोई ऊपर डिटेल फर्दर नहीं दी थी आपको, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आप प्लस माइनस है। तो अगले स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लस कब लगाना है और माइनस कब लगाना है, फिर क्यों ऐसा होता है वो फिर आगे जाके हम बाद में इसको डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, ये आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट वाला। ओके, y is equals to 2x minus 1 over 3 plus 5x. Y into 3 plus 5x equals 2x minus 1. x को सब्जेक्ट बनाना है तो इसको एक्सपैंड करूंगा और x टर्म्स को इकट्ठा करना है मुझे। 3y प्लस 5xy इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब क्योंकि हम x को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो x वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे हम, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो 5xy माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3y। ठीक है, अच्छा यहां से आप x कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया तो 5y माइनस 2 टू माइनस 1 माइनस 3y। x आपके पास हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3y ओवर 5y माइनस 2। तो फंक्शन h था ये, तो h इनवर्स ऑफ x आपके पास आ जाएगा -1 माइनस 3x ओवर 5y माइनस 2। हो सकता है आप में से किसी का आंसर 1 प्लस 3x ओवर 2 माइनस 5y आया हो, दोनों ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इधर से आपने माइनस कॉमन लिया और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये +1 हो गया, ये +3x हो गया। उस माइनस साइन को जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5y हो गया और ये +2 हो गया। तो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट।
तो दिस इज h इनवर्स ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ऐसा बेटी समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो पूछे। क्लियर है? जी सर। ओके शाबाश। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक। वैसे तो ये भी बीच में अभी हमने क्वाड्रेटिक किया है, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक आ जाता है, इनवर्स ऑफ अ कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक हो गया? इनवर्स ऑफ क्वाड्रेटिक, तो बेसिकली y is equals to f of x, f of x is equals to ax squared plus bx plus c। अच्छा, इसमें जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे, आप लाख कोशिश कर लें, आप x को सब्जेक्ट नहीं बना सकेंगे। ठीक है? आप जैसे अभी हमने पीछे हमने तो भी क्वेश्चंस किए हैं, हमने पहले x को सब्जेक्ट बनाया, इधर भी x को सब्जेक्ट बनाया, इस केस में भी पहले हमने x को सब्जेक्ट बनाया, फिर इनवर्स बनाया, इधर भी हमने पहले x को सब्जेक्ट बनाया। तो इधर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इस x को सब्जेक्ट नहीं बना सकेंगे, बिकॉज आपके पास दो x है और दोनों की पावर डिफरेंट है। बेशक अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप ट्राई कर लीजिए। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो उसका एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि आपके पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c फॉर्म में अगर लिखा हुआ है। प्रॉब्लम इधर ये है कि दो x है एंड वी हैव टू डिफरेंट पावर्स ऑफ x। So the solution to this problem is you transform this function into a completed square function. तो आप x minus a, नहीं a की जगह कोई और यूज कर लेते हैं, x minus p whole squared and minus q। आपने उसका स्क्वायर कंप्लीट कराना है। अब आप यहाँ पे देखें, एक ही x रह गया, इसको सब्जेक्ट बनाना आसान है। ठीक हो गया? सो लेट्स डू एन एग्जांपल। तो पहला काम आपका क्या होगा कि आपने स्क्वायर कंप्लीट करना। So for example, you have a function f of x equals x squared minus 8x minus 3 for x is greater than equals to 4. Find f inverse of x। इसकी टेंशन बेटा भी नहीं लेनी आपने, आप सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन का इनवर्स निकाला है। हमने क्वाड्रेटिक्स में पढ़ा है स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है। अगर वो भूल गया, थोड़ा सा रिकॉल करना है, तो आप रिकॉर्डिंग्स जाके देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक्स वाले चैप्टर में जाके उस रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी।
हाँ, ठीक ठीक। उसको बिलाल को बोले पानी दे दे। हाँ जी, हो गया। रिदा, Yes. गुड। क्या आंसर आना है? रिदा, अब्दुल्ला बच्चे आपसे हुआ है? नहीं सर अभी नहीं हुआ। आयशा, I got x squared with 361 plus 4. ओके, दोबारा बोले। X squared with 361 plus 4. समझ नहीं आया, चलो ठीक है, मैं भी करता हूँ। हो सकता है आप ठीक बता रहे हो, मुझे सुनने में सही नहीं आ रहा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कंप्लीट द स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर कंप्लीट करना है, हमने सीखा कि इसका स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक का स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं। एक्स ब्लैंक स्पेस होल स्क्वायर माइनस ब्लैंक स्पेस होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इन दो की जगह पे। तो जो आखिरी कांस्टेंट है इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। इन ब्लैंक स्पेसेस में we always put the half of the coefficient of x। यहाँ से आपके पास आ गया f of x equals x minus 4 whole squared minus 16 and minus 3 is minus 19। ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। जब हमारा स्क्वायर कंप्लीट हुआ, अब now we are going to move further towards making x the subject. So f of x की जगह first of all I'm going to write down y equals x minus 4 whole squared minus 19, y plus 19 equals x minus 4 whole squared. I'm going to take square root on both sides. वहां से आपके पास आएगा plus minus y plus 19 equals to x minus 4, and x will be equals to, इधर -4 इधर आके +4 हो गया, 4 plus minus root of y plus 19. Okay, so therefore f inverse of x is equals to 4। अच्छा, अब इनमें से कोई एक साइन लगाना होता है प्लस माइनस में से। इस केस में प्लस का साइन आएगा क्योंकि इधर ग्रेटर देन का साइन है। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखें, जब ग्रेटर होगा तो प्लस का निशान आएगा। अगर यही चीज होती फॉर एक्स इज लेस देन 4 या लेस देन इक्वल्स टू 4, तो उसमें आप माइनस का साइन लगाते हैं। अभी खैर द क्वेश्चन व्हिच वी आर डूइंग दिस वन, इट इज ग्रेटर देन, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। और प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 19, ठीक है। किसी भी इंटीजर को रूट के साथ प्लस माइनस करने तो वो पहले करें, बाद में ना कीजिएगा। मैथमेटिकली ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं, बट जब आप लिख रहे हैं पेपर पे तो वो एग्जामिनर को रीड करने में आसानी होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर? ये हमने इसका इनवर्स फंक्शन निकाल लिया। समझ में आया जी? हफ्सा, आयशा, अब्दुल्ला एंड रिदा? Yes, sir. चले एक क्वेश्चन दें आपको करने के लिए अब। f of x equals
x squared plus 10x plus 14 or x is less than 5. आज हमने 2 दिन का काम 1 दिन में कर लिया। ठीक हो गया? बच्चे थोड़ा जल्दी करें। Once you're done, let me know. ताकि फिर मैं Sir. done? Yeah. Sir, I Done, had done. one question. While जी, जी, we were completing the square, the part that's inside the square brackets, is it gonna be x plus 5 or x minus 5? Like we're gonna keep the sign from the initial plus 10x, right? Yes. Okay. Plus 10x का half plus 5 आएगा। ठीक हो गया? Okay. So f of x equals to x squared plus 10x plus 14. If I want to complete the square, f of x equals, so x blank space whole squared minus blank space whole squared. This is the replacement for the first two terms. The constant term, we carry it along as it is. So in the blank spaces, we put half of the coefficient of x, which is plus 5 in this case. We simplify it. So f of x, that will be equals to x plus 5 whole squared. Now minus 25 plus 14, what does that give you? Minus 11? Minus 11. So we have completed the square. Now we will move further in order to find out the inverse of it. So y is equals to x plus 5 whole squared minus 11. Y plus 11 equals x plus 5 whole squared. X plus 5 whole squared is equals to y plus 11. X plus 5 is equals to plus minus root of y plus 11. X equals to minus 5 plus minus root of y plus 11. This implies that f inverse of x is equals to minus 5. Now, out of these two signs, which one I'm going to keep? Minus, because it is less than. So minus root of x plus 11. ये आपका आंसर आ गया. Clear? समझ में आया बेटा? The reason why we put minus for the less than and plus for the greater than, we will be talking about that reason in later on. Okay? आगे वाले lectures में हम इसको देखेंगे. इसकी reason क्या है? अच्छा जी, एक क्वेश्चन और करें, फिर आज का लेसन खत्म. टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 16x plus 3
x is greater than or equals to 4. Find f inverse of x. Questioning. Hafsa, what's the catch in this question? I As in the didn't see muddiest any point. catch. What's the muddiest point here? How is it different than the previous one? I mean, for me, it was probably the completing the square initially, but I don't know. Okay, how is it different? Very good. It's greater than equal to 4. Greater than or equals to 4. Uh-huh. The We left. had to take 2 common. Yes. In order to complete the square, you are supposed to make sure that the coefficient of x squared is positive 1. Only then you can complete the square. That's what we studied in quadratics. So if I am to complete the square of this one, this is how I'm going to do. I'm going to take 2 as common from the first 2 terms. So that is going to leave me with x squared minus 6, x squared minus 8x. So that's 2 is common from the first 2 terms. Now I'll complete the square for these 2 terms and I'll leave everything as it is. So f of x equals 2 x blank space whole squared minus blank space whole squared. Everything else comes along as it is. In the blank spaces, we need to put half of the coefficient of x, which in this case is negative 4. So f of x equals 2 x minus 4 whole squared minus 16, and then plus 3.
So f of x equals 2 times x minus 4 whole squared minus 32 and plus 3. What does that give you? Walaikum assalam. Minus 32 plus 3 minus 90. Oh, no, minus 29. Minus 29. Okay. So this was the muddiest point here. This is how this question was different. Once you have obtained the completed square format, then the rest is easy. Y equals to 2 to x minus 4 whole squared minus 29. Y plus 29 equals to 2 into x minus 4 whole squared. Y plus 29 over 2 equals to x minus 4 whole squared. And then plus minus root of y plus 29 over 2 equals x minus 4. Then x equals to 4 and plus minus root of y plus 29 over 2. Therefore, f inverse of x equals to 4 plus or minus plus root of x plus 29 over. This is your final answer. Clear? So today we only learned बाकी सारी चीजें आपकी IGCSE O levels वाली थी. आज की lesson में जो हमने main चीज सीखी है वो the new thing with respect to your AS is that in order to find out the inverse of a quadratic function, first you need to complete the square and then you can find out the inverse. Clear? Chal, that's it for today. Inshallah, see you all tomorrow. Allah Hafiz. Officer. Allah Hafiz. Allah Hafiz.